Good morning, students. Our lesson is chemical kinetics. Last topic we discussed about integrated rate equations, and now we are going to discuss pseudo first order reaction. In this pseudo first order reaction, actually the reaction seems to be C. Means reaction देखने के लिए तो first order reaction जैसी रहेगी, but that is not completely belongs to the first order reaction. That's why the reaction is known as pseudo first order reaction. First order नहीं बता, pseudo means half, means reaction तो देखने के लिए तो first order की जैसे दिखेगा, but not first order reaction. That's why the order of reaction is known as pseudo first order reaction. Here the order of reaction is sometimes altered by conditions. Conditions पे depend होता है, means the reactive conditions. Consider a chemical reaction between two substances when one reactant is present in large excess during the hydrolysis of 0.01 mole of ethyl acetate with 10 ml water. Amounts of the various constituents at the beginning T is equals to 0 and the completion at T of the reaction are given under S. Means यहाँ पे एक reaction mention किया, different concentrations or different moles. One reactant having large proportion of mole and another one reactant is less proportion of moles. Here reaction between water and ethyl acetate. C2H5 C double bond H. So ethyl acetate. C2H5 C2H5 C double bond. Sorry, 1 minute. Ethyl acetate. This one is CH3 C double bond C2H5 is known as ethyl acetate. Reaction is pseudo first order reaction. Ethyl acetate treated with water, it forms ethanoic acid and ethyl alcohol. CH3 C double bond H C2H5 OH ethyl alcohol form. Means यहाँ पे एस्टर वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिटिक एसिड ethyl alcohol form. This reaction is one of the example for pseudo first order reaction because here ethyl acetate is concentration of moles 0.01 mole and water molecule having 10 moles. T is equals to 0. T is equals to 0 होगा तो initial concentration यहाँ पे ये दोनों का concentration T is equals to 0 नहीं तो वो 0 है. T is equals to some time. At T time the concentration of ethyl acetate will be decreased. How much it will be decreased? 0.01 mole will be decreased. Then after time T the mole of ethyl acetate will become 0 and here 0 10 minus 0.01 at after time sometime the mole of water is 9.909 mole, sorry 0.01 mole or 0.9.9 mole will be remaining here. And what is the mole of the product? यहाँ पे ethyl acetate जितना कंज्यूम हो उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म हो. The mole of acetic acid is 0.01 mole and ethyl alcohol also having 0.01 mole. Hence completely यहाँ पे ये मोल पे डिपेंड हुआ. यहाँ पे 0.01 मोल हो ये उतना ही कंज्यूम हो फिर यहाँ से रिएक्शन 0.01 मोल प्रोडक्ट 0.1 मोल प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा. तो एक्चुअली यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 55.5 मोल्स पर लीटर रहेगा. तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का मोल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हुआ 0.01 डिक्रीज हुआ. तो 0.01 9.99 मीन्स टोटल 10 में इक्वल टू
10 रहेगा, मतलब इसमें से जितना डिक्रीज हुआ वो नेग्लिजिबल हो सकता है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं हुआ, मीन्स इन दिस रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज अकर्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, बट चेंज इन अकर्ड हियर इथाइल एस्टेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, तो इथाइल एस्टेट का कॉन्सेंट्रेशन जितना है प्रोडक्ट उतना कम हुआ। Here this reaction is seems to be first order reaction based on the concentration of CH3 C double bond O C2H5. Ethyl acetic के हिसाब से देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट यहाँ पे H2O भी 0.01 मोल नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोसेस ही नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, बेस्ड ऑन दिस वन, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर वन होता है और विद रिस्पेक्ट टू Etheristic order 1 with respect to order 1. 1 plus 1 total order of the reaction is 2. But there is no change in the concentration of water. The water का mode constant है और concentration constant है, तो reaction देखने के लिए second order पे रहेगा, second order ऐसे रहेगा, but completely reaction based on the concentration of only one reactant, that is ethyl acetate. That's why this reaction is equal to pseudo first order reaction. Okay, result ethyl acetate water molecule, तो इसका concentration में कुछ change है, actually reaction देखने के लिए second order reaction के जैसे दिखता है, order for this reaction is equals to 2 because the rate is equals to K into concentration of CH3 C double bond O C2H5 and concentration of H2, तो इसका एक्सपोनेंस कितना है 1 plus 1 2 होगा, तो एक्चुअली रिएक्शन देखने के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, but the concentration of water is does not change, 0.01 means very less amount will be changed according to the original concentration of water, concentration in below 55.5 मोल्स पर लीटर, उसमें से 0.01 रिमूव होगा तो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज नहीं रहेगी, तो इस पे डिपेंड नहीं होता है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल्स टू CH3 C double bond O C2H5 power 1 K n is equals to 1, means according to experimental data it shows only first order reaction, but this seems to be second order reaction, तो देखने के लिए second order ऐसे रहेगा, but originally it shows first order reaction, that's why this is known as pseudo first order reaction. Here another one example also given, that is inversion of cane sugar is another pseudo first order reaction. Inversion of cane sugar, cane sugar inversion is decomposition sugar C12 C12H22O11 plus H2O from C6H12O6 plus C6H12O6, ग्लूकोज फ्रक्टोज है वो दोनों, ग्लूकोज फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर्स, तो यहाँ पे ये टोटल कंज्यूम होगा, वहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंजेस आता है वेरी लेस रहेगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन दिस reactant only. That's why this reaction also belongs to the pseudo first order reaction. Reaction देखिए order is 2, but it is experimental results only one order. That's why this reaction is belongs to the pseudo first order reaction. क्लियर समझ में आया? तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जो रिएक्टेंट होता है उसको कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस रहेगा वो नेग्लिजिबल, वो कांस्टेंट है, तो कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड हुआ, लेस अमाउंट मींस लिमिटिंग रिएजेंट पे। Okay, next one is effect of temperature on rate constant. Effect of temperature on rate constant is very important. Effect of rate constant. Rate constant. Sorry. Temperature on effect of temperature on rate constant. Rate constant. Rate constant
input. Effect of temperature on rate constant. First one, what is the relation between rate of reaction with temperature? Maximum reactions, when we increase the temperature, then rate of reaction also increase. Rate is equals to K into concentration of reactant. ये दोनों directly proportional है. When we increase the temperature, automatic rate constant will be increased. ये clear पता चलता है. R is equals to K into concentration of reactant. When R will be increased, then K also automatically increases. When R will be increased, maximum reactions, when we increase the temperature, rate of reaction also increases. When rate of reaction increases, constant also increases. Here, mostly the constant increases, the rate constant increases with increasing temperature. It is clear. It is noted that if the graph of rate constant K, long K or log K is plotted against inverse of temperature T, inverse of temperature T, then only straight line will be obtained. A straight line is obtained. The result is observed from Arrhenius equation. Now the graph का discussion. What is Arrhenius equation? How graph will be formed between log 10K and inverse of temperature. Inverse of temperature log 10K लेगी तो ये straight line रहेगा, उसमें से different values को find out करना. अभी rate constant directly proportional to the temperature prove करना है. So what is Arrhenius equation? Here this one is important. Arrhenius Arrhenius equation. What is Arrhenius equation? K is equals to E into EA power R minus E power minus EA upon R. K is equals to K here rate constant. Rate constant में discussion करना. Rate constant K is equals to E into E power minus EA upon R. This is the Arrhenius rate equation. From this equation, we can prove this one. What is the effect of temperature on rate constant? When we increase the temperature, the rate constant also increases. This equation explains the relation between temperature and rate constant. Here K is equals to rate constant, A is equals to Arrhenius constant, EA is equals to activation energy, R means ideal gas constant, T means temperature. T temperature, gas constant, activation energy, A Arrhenius constant, A rate constant. Here and next, here to apply the logarithm this equation. तो ये equation को log apply करो. Ln k is equals to ln e. Here ln e minus e upon rt लिख सकते हैं logarithm apply करने. Otherwise ln k natural ln k is equals to ln e minus e upon r into 1 upon t. तो स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया. When we make a graph between ln k versus 1 upon t, ln k versus 1 upon t, then straight line will be applied. तो यहाँ पे ln की जगह पे हम लोग log लेना है. log लेना है तो ln को रिमूव करके 2.303 ऐड करना है. 2.303 log k is equals to 2.303 log e minus a upon r into 1 upon t. ये 2.303 को इज इक्वल टू के बाद लेकर log e इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा
तो हो जाएगा तो log E minus EA upon 2.303 R into 1 upon E equation आपको here the energy of activation for a reaction being constant and the value of rate constant K are determined at different temperatures and a graph of ln K versus 1 upon T is plotted. The straight line will be obtained by changing the equation. It can be written as तो equation change किया तो long apply कर दिया next. The energy of activation for the reaction being constant, R is gas constant and the above equation can be straight line type. Hence, if a graph of log K versus 1 upon T is plotted, the values of slope will be equal to minus EA upon 2.303 or if the value of R is taken in Kelvin, kilocalorie or kilojoule, then the value of EA will be also in kilo Kelvin calorie or Kelvin joules from the values of intercept. The value of log E will be obtained and constant E can be written. यहाँ पे simple first log K versus 1 upon टेम्परेचर इनवर्स को ग्राफ करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी here log k this one is log k and here 1 upon the inverse of temperature then straight line will be obtained in this graph the slope is equals to minus E upon 2.303 R and this value intercept equal to log A 2.303 log A value तो 2.303 को वहाँ पे आएगा तो ये अपन R तो log A का वैल्यू इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू log A स्लोप इज इक्वल्स टू A अपन R का तो इसमें से हम लोग A log K versus 1 upon T means last finally ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते ये मीन्स अर्हीनियस कांस्टेंट को ये ग्राफ यूज करके इसमें से अर्हीनियस कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट अर्हीनियस इक्वेशन शोज दैट रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो अर्हीनियस कांस्टेंट तो आफ्टर कैलकुलेशन shows that rate constant K increases exponentially with increase in temperature. How this can exponential variation can be studied. तो ये K value rate constant increase in temperature it is also increasing. How this can be happen? So simple. When we increase the temperature, the fraction of the molecule will be increased. Fraction means collision of the molecule increase over. When the increase in collision of the molecules, then kinetic energy also increases. Kinetic energy increase over the speed of the reaction will be increasing, means the rate of reaction increases, then the rate constant also increases. Here, when we by increasing temperature from 0 to 10 degrees centigrade, means 10 degrees centigrade, sorry, 10 Kelvin increases. When we increase the temperature 10 Kelvin temperature, the kinetic energy increases only by 3%. तो टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन विल बी इंक्रीज 3% only. Answer observe. When we increase the 10 Kelvin temperature of the reaction, then kinetic energy of the reaction will be increased 3% only. And for most of the reactions, the rate have almost doubled by increasing the temperature by 10 Kelvin. So when we increase the temperature of the reaction 10 Kelvin, then the rate almost doubled increases by the temperature increasing 10 Kelvin temperature. Means when we increase the 10 Kelvin temperature, then the rate will be doubled.
W means when we increase 10 Kelvin temperature, then rate of the reaction will be double, W जाएगा. और kinetic energy कितना increase होगा? When we increase the 10 Kelvin temperature, then 3% of the kinetic energy of the reaction will be increased. When we increase 10 Kelvin temperature of the reaction, then rate will be doubled. And for this, we will observe one example here. When we increase the temperature, here the rate of the reaction increases, then kinetic rate constant also increases. How this rate of the reaction will be increased? When we increase the temperature, there must be some pushing energy or threshold energy required for the reaction of molecules. तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज. तो पुशिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स एक्वेशन एनर्जी से ज़्यादा. तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स पुशिंग एनर्जी होगा तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज होगा. थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. तो रिएक्शन फॉरवर्ड होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को चाहिए. तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से मिलेगा? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगा, देन रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. हियर one graph is given, that is the fraction of the molecules versus kinetic energy. When we increase the temperature, fraction of the molecules will be increased, the kinetic energy increase over, as well as product formation also increase. Here graph important graph fraction of molecules increase over. Here kinetic energy. The first graph is okay. This is the first graph. यहाँ पे जो डॉट लाइन किया है ये प्रोडक्ट एट द टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे kinetic energy increases, then fraction of the molecule also increases, and this much of the product will be up. यहाँ पे less product. Clear? इसको जस्ट काम करें हाई पोटेंशियल पे दिखाने का. This is the fraction of molecules. यहाँ पे जहाँ जो जो ये जो लाइन है most probable speed of the molecule, most probable speed. यहाँ पे क्या होगा, ये जो kinetic energy increase होगा, kinetic energy first kinetic energy is zero, number of fraction of molecules zero, when kinetic energy of the molecule simple. When kinetic energy of the molecules will be increased, when we increase the temperature, then kinetic energy of the molecule will be increased. So we यहाँ से T1 temperature T temperature से हम यहाँ से temperature increase हो तो kinetic energy also increase. तो यहाँ maximum kinetic energy के molecule आए, उसके बाद क्या होगा, collision increase होगा, maximum kinetic energy बढ़ेगा तो speed of the molecule बढ़ेगा, number of collisions per unit time will be decrease increase होगा तो क्या होता है, तुरंत product form होने के chances है. तो after maximum fraction of molecules, then it will be decreased. तो number of collision decrease होगा, collisions fraction decrease होगा तो क्या होता है, reactant will be converted into product. तो उसमें उसका एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज होकर फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उनका कोलिजन डिक्रीज होगा. मीन्स यहाँ पे ये जो कोलिजन से फ्रूटफुल कोलिजन से यहाँ पे इनका प्रोडक्ट फॉर्म होगा. नेक्स्ट, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज किया T plus 10 Kelvin टेम्परेचर मीन्स 10 Kelvin टेम्परेचर को इंक्रीज किया. 10 Kelvin टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो
यहाँ से ग्राफ ऐसा, यहाँ से ये जो ग्राफ है इंक्रीज होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी इंक्रीज। ये जो डॉटेड लाइन है, when we increase the temperature, this one is T plus 10 Kelvin temperature, तो 10 Kelvin temperature पे T Kelvin temperature में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। when we increase the 10 Kelvin temperature, the production of the product will be increasing. When product formation will be increasing, the rate of reaction increases and rate constant also increases. तो यहाँ पे 10 Kelvin increase करने से क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। ये जो ग्राफ लाइन है पूरा प्रोडक्शन, और ये जो ग्राफ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ग्राफ ये शेप, यहाँ पे ब्रॉडनेस इंक्रीज हो रही है, ब्रॉडनेस ऑफ द ग्राफ विल बी इंक्रीज, मींस यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यहाँ तक मॉलिक्यूल जाएगा, मींस लोअर टेम्परेचर पे कितना एनर्जी को, मींस काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक आता है। व्हेन वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली स्पीड विल बी decreased and maximum molecules will be converted into product. This is the graph. Already ये आपको 11th स्टैंडर्ड में केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ एक्सप्लेन किया, राइट। तो ये अगर ये ब्रॉडनेस ऑफ द ग्राफ विल बी मींस मैक्सिमम मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो rate constant also increases. Final conclusion is when we increase the temperature, the rate of constant will be increased. How many times rate will be increased by increasing 10 Kelvin temperature? Double. 2 times will be increased. When we increase the 10 Kelvin temperature, the rate of reaction will be increased to 2 times. Means double. 2 times not double होगा, जितना होगा उसका double. 2 times होगा तो 2 into first time rate of reaction, so 2 times is wrong, double will the rate of reaction will be increased by increasing 10 Kelvin temperature. And next one here, at different temperatures Arrhenius equation will be changed. तो different temperatures में क्या होता है, at T1 T2 temperatures ले, T1 temperature Arrhenius equation is changed। तो टेक्स्ट बुक में इसकी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उतना जरूरत नहीं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये जो डॉट लाइन है, दिस वन इज प्रोडक्ट, व्हेन T1 temperature this much of product will appear, ये प्रोडक्ट फॉर्म अभी T1 T temperature, when we increase the 10 Kelvin temperature, then production will increase much, ये पूरा increase होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट को इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे this much of portion will be converted into product, here this much of portion will be converted into product। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस होता है, फ्रूटफुल फ्रैक्शंस रहेगा, दिस फ्रूटफुल फ्रैक्शंस विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। यहाँ पे इतना ही मॉलिक्यूल फ्रूटफुल फ्रैक्शंस रहेगा तो उतना प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वी apply the different temperatures to the Arrhenius equation. So Arrhenius equation, different temperatures. Here Arrhenius equation mentioned earlier is written corresponding to different temperatures at T1 and T2 when we can write. First one, ln Q1 is equals to ln T1, तो टेम्परेचर different टेम्परेचर होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, तो T1 पे K1 रहेगा, T2 पे K2 पे, ln K1 is equals to ln E minus E upon R T1, and ln K2 is equals to ln E minus E upon R T2। कांस्टेंट तो चेंज होने वाला है यहाँ पे K, ये चेंज होगा तो K चेंज होगा। ये यूनिवर्सल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ कंपल्सरी। नेक्स्ट, व्हेन ln K2 माइनस इक्वल करो ln K1 is equals to, here common values are E upon
R is constant values. Then K1 upon K2. So here EA upon equal to A cancel out log K2 minus K1 is equals to EA upon R. Here into common. EA upon R common one. So 1 by T1 minus 1 by T. नेक्स्ट लॉन को रिमूव करना है तो लॉग इसमें से k2 log a minus log b that is equals to log a by b हो जाएगी log k2 upon k1 k2 upon k1 is equals to e upon r r means ideal gas constant तो ln रिमूव तो e upon r तो log होगा तो यहाँ पे 2.3030 से मल्टीप्लाई करना so this one then 1 upon t1 minus t so log k2 minus k1 is equals to e upon 2.303 r into 1 by t1 minus 1 by this is the equation when temperatures will include in REMS equation final and initial कंपल्सरी यहाँ पे टेम्परेचर जीरो नहीं होगा टेम्परेचर जीरो होगा तो ये मीनिंगलेस टेम्परेचर कंपल्सरी मिनिमम रहेगा क्योंकि मिनिमम कब होगा when reactant will be converted to product energy will be released this energy will use in the reaction so compulsory temperature T upon 1 T by sorry T 1 upon T does not equal to 0 0 होगा तो ये मीनिंगलेस होगा then log k2 upon k1 is equals to Ta minus Ta upon 2.303 into 1 into 1 upon T1 minus T2. So at different temperatures, initial temperature, final temperature, Ta from the graph, right? ये पूरा वैल्यू आपको स्लोप ग्राफ से मिलेगा और डिफरेंट टेम्परेचर्स यहाँ पे अप्लाई करो K1, K2 एंड K1 log K यहाँ से मिलेगा इनिशियल फाइनल K1 राइट ये दोनों वैल्यू से एक को फाइंड आउट कर सकते हैं तो log K1 होगा तो ये वैल्यू इसमें से फाइंड करना तो आपको K1 K2 find out कर सकते हैं and next here when the number of results is less than instead of drawing the graph values of K1 and K2 can be determined experimentally at temperature T1 and T2 and by putting the values in equation 1.42 means this equation for different times experiment करना the value of EA can be obtained EA value find out कर सकते हैं in any one of the equation, the value of EA and K and T are substituted and the value of log A or A can be obtained. In addition, the value of EA for any reaction is definite and so the rate constant K at any other temperature can be evaluated from the value of EA. This will be clear from the exam. So यहाँ पे ये important है. Here this equation by this equation we can find the value of E. Equation energy to find out. So ये value constant है यहाँ पे ये value K1 K2 values है K1 K2 values भी रहेगा तो K1 K2 values पर experiment यहाँ पे observe करो when the number of result is less than instead of drawing the graph से बिना means experimental करो experimental करेगा तो आपको values of K1 and K2 can be determined experimentally K1, K2 values are determined by the experiment. ग्राफ से होगा तो डायरेक्ट लॉग ये मिल जाएगा ये को फाइंड आउट कर सकते हैं बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू K1 K2 नंबर ऑफ टाइम्स करने का तो उसमें से आपको K1 K2 मिलेगा उसके बाद K1 K2 यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू से तो ये इक्वेशन से आपको EA मिलेगा EA मिलने के बाद ये EA वैल्यू को अगेन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो आपको ये वैल्यू लॉग ये तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं here above. The values of EA, K and T are substituted and the value of log A or E can be obtained. Clear होगा तो ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं
One example is there. Example we will discuss next. Very important Arrhenius theory, very important, and 4 more question will come from this lesson only. In this lesson से ये lesson में से एक 4 more question रहेगा. ये 4 more question completely related with Arrhenius equation.